हार्ट टू हार्ट प्रोग्राम में आपका स्वागत करने के लिए आपके इंतजार में थी सरिता सबरवाल। आप सबका स्वागत करती हूँ, आपका खैर मकदम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी हैं खुश हैं और खैरियत से हैं, हमेशा तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें। ये दुआ, ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूँ और करती रहूंगी। किसी वजह से अगर आप ठीक नहीं हैं तो यही प्रार्थना है आप सबके लिए कि आप जल्दी से ठीक हो जाएं। एंड इफ यू आर फीलिंग बिट डाउन तो चीयर अप, लाइफ इज टू लिव, लाइफ इज टू एंजॉय। जियो और शान से मुस्कुराते, गुनगुनाते, चहकते, महकते और थिरकते हुए। प्रोग्राम की शुरुआत मैं इसी तरह से करती हूँ हमेशा, और आज भी वैसे ही आगाज हुआ। हम में से बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि कोरोना छोड़ गया हमें, पर ऐसा नहीं है। कोविड इज स्टिल हियर, और कोरोना से की जो संख्या है, लोगों की जो पीड़ित हो रहे हैं उनकी संख्या वो बढ़ रही है। इसलिए मैं यही कहूंगी प्रोग्राम के शुरू में, अपना और अपनों का ख्याल रखिए और मास्क लगा कर रखें, दूरी बना कर रखें। पर दिलों में दूरी नहीं होनी चाहिए, दिल नजदीक होने चाहिए एकदम, तभी तो हार्ट से हार्ट की बात होती है। सो ये है इस प्रोग्राम का नाम। किसी ना किसी सेलिब्रिटी के साथ आपकी सेवा में हाजिर होती हूँ। आज भी मेरे साथ एक बहुत ही प्यारी सी सेलिब्रिटी है। शी इज गॉर्जियस, शी इज ब्यूटीफुल एंड शी वाज अ मॉडल बिफोर। अभी भी मॉडलिंग करती हैं, लेकिन फिल्मों में इन्होंने एंट्री मारी 2006 में। इमरान हाशमी के साथ दिल दिया है फिल्म से इन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। 2007 में द ट्रेन में नजर आई, उसमें भी इमरान हाशमी थे इनके साथ। एंड उसके बाद जिला गाजियाबाद में बाप का माल, इस गीत ने धूम मचाई थी और इनकी अदाएं आपको भा गई थी, आपने इन्हें बहुत पसंद किया गया था। देन उसके बाद सेकंड हैंड हस्बैंड, लॉक पंजाबी की फिल्म में भी इन्होंने काम किया। और सबसे ज्यादा मुझे ये बहुत प्रिटी लगी थी, और वो थी एक सुखविंदर शिंदा और राहत फतेह अली खान की एक बहुत ही प्यारी सी कोलैबोरेशन थी, और गुमसुम वाला गीत, और उस वीडियो में इन्होंने राहुल भट्ट के साथ काम किया था, इफ यू डू रिमेम्बर। आज बहुत सी बातें होने वाली हैं इनके साथ। कौन है, अभी तक मैंने नाम नहीं बताया। वैसे फिल्मों में गीता बसरा के नाम से जानी जाती है, लेकिन अब हैं ये गीता बसरा सिंह। आप कहेंगे गीता बसरा सिंह? यस, हरभजन सिंह जी को तो जानते हैं। ये सिंगल सेलिब्रिटी नहीं है, डबल डबल इनको एक्सपोजर मिलता है और डबल डबल इन्हें प्रेज भी मिलती है। एक अपनी अदाओं के कारण, अपनी ब्यूटी के कारण, और दूसरा हरभजन सिंह की वाइफ होने के कारण। तो आइए मिलकर इनका स्वागत करते हैं, इनसे बातचीत करते हैं, इन्हीं के करियर के बारे में जरा जानते हैं, किस तरह से ब्रिटिश बॉर्न गर्ल इंडिया पहुंची, मुंबई पहुंची और फिर फिल्मों में कदम रखा। तो मिलकर इनका स्वागत करते हैं। ये है गीता बसरा सिंह। हाय गीता, हाउ आर यू टुडे? हाय सरिता जी, वेरी गुड, थैंक यू फॉर लवली वेलकम। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। थैंक यू। काश कि आप मेरे पास होती यहाँ आकर, तो मुझे बहुत अच्छा लगता। तो आई वुड हैव गिवन द बिग हग। यू लुकिंग सो काश, गुड। थैंक यू सो मच। काश मुझे घर आते हुए 3 साल हो गए, तो मैं बहुत तरस रही हूँ कि मैं वापस यूके आऊँ, लेकिन आ नहीं पा रही हूँ। तो होपफुली सून। सो किसी भी तरह से कोरोना ने आपको अफेक्ट किया, कोविड ने? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक्चुअली पीक टाइम पे, जब कोविड यहाँ इंडिया में था, मैं प्रेग्नेंट थी। एंड बहुत अलग प्रेगनेंसी रही थी मेरे लिए। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी के मुताबिक आई वॉज एट होम इन 4 walls, डिड नॉट गो आउट, किसी को मिली नहीं, किसी को मतलब कहीं भी नहीं गई। सो आई टोटली वॉज confined in 4 walls. And yeah, it was a difficult time, but by God's grace अच्छा था कि हम सब एक साथ थे, फैमिली। मैं I don't think मैंने कभी ऐसा टाइम स्पेंड किया मेरे फैमिली के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ। I always tell him मजाक में कि ये एक्चुअल कोविड के कारण हमने एक्चुअली शादीशुदा लाइफ जी है, जो हमने इतने साल नहीं जी थी, क्योंकि वो हमेशा ट्रैवल करते हैं या मैं ट्रैवल करती हूँ। तो ये पहली बार था कि हम 2 साल एक दूसरे के साथ थे। राइट। उनके साथ आपकी शादीशुदा लाइफ के बारे में जरूर बात करूंगी लेटर ऑन, लेकिन पहले मैं आपसे आपको ले जाती हूँ पोर्ट्समथ में। पोर्ट्समथ जहाँ आपका जन्म हुआ, जहाँ आप बड़ी हुई, और अपने पेरेंट्स के बारे में किस तरह की रिहाइश थी यहाँ पर, मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। आपकी पढ़ाई लिखाई सब यहाँ हुई थी, सो टेल Yes, अस अबाउट चाइल्डहुड।
I'm born and brought up in this beautiful little city called Portsmouth, जैसे आपने बोला, and बहुत quaint little city है, बहुत सुंदर city है, seaside है, countryside भी है, हर चीज वहाँ मिलती है, and मेरी बचपना वहाँ से गुजरी हुई. I went to a private school in Portsmouth called Mayville High School, and from there, before then I went to a college called Southdowns College. और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मेरी मम्मी को बोला कि at that point of time industry बहुत different थी. 2006, I mean I came in 2004 to Mumbai. So यहाँ इंडस्ट्री बहुत डिफरेंट तरीके से चलती थी, एंड एक एज होता था एक लड़की के लिए कि आप 18-19 साल की लड़की हो, आप आपका ज्यादा चांस मिलता है मूवीज में काम करना. एंड क्योंकि मैं इस शहर से नहीं हूँ, मैं इस कंट्री से नहीं हूँ, आई रियलाइज दैट at the age of 18 that it was the perfect time for me to try and make my career in this industry. तो मैंने अपनी मम्मी को पूछा था तब कि मुझे मुंबई जाना है और मुझे ये अभी एक चांस है, नहीं तो ये चांस निकल जाएगा, ये एज निकल जाएगी और ये टाइम निकल जाएगा. तो because of my parents' support, my mom's support, she said, yeah, that's fine, let's go. She supported me wholeheartedly with an uncle of mine, and me and my friend both decided कि हम यहाँ आएंगे, who's like my sister. So we both decided कि हम आएंगे and we will try and make a career in Bollywood. Okay. तो तब से शुरू था कि I said to my mom कि देखो mom, नहीं होगा तो I can come back and finish my graduation. एक एज लिमिट नहीं है ग्रेजुएशन के लिए, लेकिन ये चीज के लिए, इंडस्ट्री के लिए एक एज लिमिट है. और तो शी अग्रीड एंड शी सेड या, क्योंकि जिस शहर को आप जानते नहीं हो कैसे चलती है, क्या कल्चर है, 2-3 साल, 4 साल, 5 साल भी लग सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग के कैसे चलती है ये इंडस्ट्री, कॉन्टैक्ट्स बनाने, कनेक्शंस बनाने, हिंदी सीखने में. मुझे हिंदी नहीं आती थी एंड यहाँ आके हिंदी भी सीखी, यहाँ का कल्चर सीखा कि कैसे इंडस्ट्री में कैसे कदम रखना है. एंड आई डिड माय एक्टिंग क्लासेस फ्रॉम हियर, किशोर नमित कपूर. So my whole industry journey started then. And I'm glad I took that decision कि मुझे मुंबई आना है. और वो नहीं डिसीजन लेती तो मैं आपसे यहाँ बात नहीं करती. So I'm so glad कि मैंने नहीं, मैं पोर्ट्समouth में बात करने के लिए. Yeah, so no, yeah, you never know कि तब क्या लाइफ होती, but I'm glad I took that decision कि मैंने इंडिया आना है. And yeah. तो गीता, क्या कब आपने रियलाइज किया था इस बात को कि यू वांट टू बिकम एन एक्टर? क्या आप स्कूल में ड्रामास, प्लेस वगैरह में Yes. So कौन, किसने इंस्पायर किया? पोर्ट्समouth में बहुत फेमस थी. मैं 1-2-3 गर्ल में जानी जाती थी. और मैं हर परफॉर्मेंस करती थी, whether it was विसाखी, नवरात्रि, वेडिंग, कुछ भी हो. मुझे एक मौका था, मुझे हमेशा एक लगता था कि ये मैं यहाँ परफॉर्म करूंगी, and I used to do every श्रीदेवी, every माधुरी song, and my mom used to stitch exactly the same costume जो वो पहनते थे स्क्रीन पे. तो मेरी मम्मी वही सेम डिट्टो आउटफिट, इवन माय 1-2-3 आउटफिट. I have a photo, I had posted it on my Insta handle a few months back. I was a replica of whatever Madhuri would wear on screen. I would wear exactly the same outfit. So I was famous in my hometown in Portsmouth. I used to perform at any given opportunity. तो एक्चुअली मुझे तभी मेरा सपना था छोटे हुए, जब भी मुझे कोई पूछता था कि आपको क्या बनना, मैं हमेशा ही बोलती थी कि मुझे एक्ट्रेस बनना है. Right. So it wasn't very easy when you left Portsmouth and you went to Mumbai. Yeah. So obviously language barrier भी था, language नहीं आपको इतनी अच्छी तरह से आती थी. हो सकता है घर में बात करते हो हिंदी में, लेकिन not to Bollywood standard, but dubbing वगैरह हो जाता. Exactly. हम पंजाबी बोलते थे घर में या इंग्लिश बोलते थे. हिंदी was a far off language where
see I learned the language जब मैं छोटी थी, पढ़ना लिखना, लेकिन जब हम एक्चुअली बात करते थे, बात तो हम घर पे करते नहीं थे, so I never actually understood how to converse in a very fluent way. एंड जब भी मैं यहाँ बोलती थी तो सब मुझे यही बोलते थे, आप यहाँ के नहीं हो ना? मैं कह नहीं, मैं यूपीएस से हूँ। कह हाँ, आपके एक्सेंट से पता चलता है। So I always, had an accent, a strong British accent. Um, so I try to kind of lessen that कि जब मैं बात करूँ तो सबको लगे कि हाँ, Yeah, he's इसमें, yeah, right. So Indian you did नकली. go to Kishore Namit School Institute as well to learn Yes, how to act, and yes. acting institute है. तो वहाँ पर क्या क्या सिखाया जाता है इंस्टीट्यूट में? People who want to go there and See, explore. acting, I personally feel it was a great experience for me. I loved acting class. मुझे बहुत सारे अच्छे दोस्त बने and मुझे confidence मिला वहाँ जाके कि स्टेज सी मैं ड्रामा तो वैसे ही करती थी बहुत मुझे बहुत शौक था ड्रामा में. इवन माय स्कूल वाज वेरी वेरी ड्रामा ड्रिवन. हम थिएटर्स करते थे, थिएटर प्लेस करते थे बहुत बड़े लार्ज स्केल पे. And see, that was from my childhood, so I always loved being on stage, whether it was in the form of dancing, whether it was in the form of acting. So any given opportunity, I used to just love being in front of an audience. So but in Kishore Namit Kapoor, I learned a lot of things, जैसे confidence, हिंदी में कैसे बात करना. In UK, I used to obviously act in English. It was a very British type of acting. Definitely. But I personally feel acting is a very subjective thing. It's very मतलब you can't learn acting as such. हर बंदे की अपनी अपनी स्टाइल होती है. आपका स्टाइल अलग होता है, मेरा स्टाइल. तो कोई ये नहीं बोल सकता ये आपका स्टाइल गलत है या आपका स्टाइल सही है, क्योंकि हर बंदे का, हर स्टार का, जो भी आप स्टार में देखोगे on the big screen, everyone has their own unique identity and their own unique style. तो वो चीज आप ये नहीं सीख के आते हो, आप ये कॉन्फिडेंस जरूर सीख के आते हो कि अच्छा योर एंगल्स, योर द वे आपने कैसे डिलीवरी देनी है, डायलॉग डिलीवरी, वो सब आप सीख के आते हो. Right. Okay. It was definitely a great experience. Yeah. First break is always very difficult. अगर first आपको काम मिल जाता है, पहली फिल्म में काम मिल गया, उसके बाद फिर आपकी एक्टिंग बोलती है और आगे काम मिलता रहता है. And ब्रेक थ्रू करना, पहली सीढ़ी पर चढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है. So कैसे पहला ब्रेक आपको कैसे मिला? So my first break, मेरे क्लास में एक लड़का होता था शाहनवाज खान. He was Kader Khan's son. And he became a very good friend of mine, and his uncle was managing Kader Khan, and he introduced me to him. And he said that this girl has great potential, मैं इसको manage करता हूँ. So he took up my career, and he said कि I will guide her, and I will promote her in this industry. So जो मेरी पहली फिल्म थी आदित्य दत्त के साथ दिल दिया है, he introduced me to them, and screen test के बाद I was selected. So actually I would say I was very blessed and very lucky कि मुझे इतने साल struggle नहीं करना पड़ा. In fact, straight after acting class in 2005 खत्म हुआ मेरा, 2006 में मेरी पहली फिल्म रिलीज हो गई. So I was very lucky in that sense, touch wood, that I was introduced to the right person, a great guy who really helped me and really kind of guided me and gave me that first step. Yeah. When you saw yourself on the screen, big screen, how did you feel? Were you your own critic? Or it was, yeah, I think everyone can say that you're your worst critic. I don't think कोई भी अपने आप को स्क्रीन पे देखता तो हमेशा यही बोलता, oh God, and ये था कि my first film was dubbed by someone else, and ये मेरे में हमेशा यही रहा था कि नहीं, मुझे अपनी फिल्म खुद डब करनी है. I don't want someone else to dub for me, but unfortunately वो accent इतना strong था, British accent, and मुझे हिंदी इतनी अच्छी आती नहीं थी, so I had to be dubbed. But ये था कि you want to be the one to
Yeah, you, dub your own film, and when you see yourself on the bigger screen, obviously you're very critical कि अच्छा ये मैं उससे ये better कर सकती थी, ये scene मैं उससे better कर सकती, but it's that's okay. that's good. So इमरान हाशमी के साथ पहली फिल्म में भी काम किया and then came The Train and The Train में भी एक बार फिर से आपने इमरान हाशमी के साथ काम किया. And I feel he's a very good actor. And He's fabulous, yeah. yeah, I've seen your film The Train, जिसमें I think a working woman and then you know had I was a extramarital. negative shade actually. It was a negative role. Yeah. It was for my second film. A lot of people would be hesitant. कि अच्छा, you're doing a total out and out negative role. Mm, Are you sure you want to do that? I felt, yeah, why would I want to do everything the same? It's great to be an actor who can play different shades, you know. mm, And the fact कि वो first half में पता ही नहीं चलता कि वो negative है. I think that was the best part of it. But yes, he is a great guy, great co-star, and a great actor. Yeah. इसके बाद जिला गाजियाबाद में आपका एक गाना था बाप का माल है क्या या वो गाने Yeah. उस गाने ने काफी धूम मचाई थी और काफी पसंद किया गया एंड that time you gave one interview and you said I find myself very lucky कि मुझे ये गाना मिला and उसमें मैं आपको अपनी अदाएं दिखाने का भी मौका मिला एंड डांस किया था Yeah. You know, अरशद थे विवेक ओबराय. total, yeah, total dance number where how you've seen all these great actresses like, Madhuri and all these women who have done such amazing performances like this and songs where they've, actually had a chance to dance. And that was my chance. And I loved it. It was a great experience. Shaking leg with Arshad and Paresh Rawalji beat and Vivek Oberoi. And yeah, it was a great experience as well. In fact, my friend had made the film Anand, and he said that I have a great song to offer you, and I said definitely, I would love to be a part of it. With a Okay, great lineup like that, and Arshad is anyway a very good dancer. उनके साथ वैसे ही dance करना बड़ा अपने आप को थोड़ा you have to step up a notch prepare. with your own Yeah. dance moves because he's so good with dance, and Vivek as well. So were you nervous, जब अपने senior actor के साथ काम करो तो was there any sort of hitch or any you were nervous? Yeah, I just was like, oh God, I hope I do it right. Like, I hope I can dance. Just say, I love dancing and I've learned dancing. But जब time आता है कि आपको on screen दिखाना है, you just feel like, I hope I do it correctly. इसके बाद आपकी फिल्म आई थी सेकंड हैंड हस्बैंड. नाम से ही पता चल रहा है सेकंड हैंड हस्बैंड की उसकी स्टोरी क्या होगी एंड उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी आपसे. ये था a comedy film, again a very different film जो मैंने तब तक की नहीं थी, and I wanted to definitely venture into comedy क्योंकि comedy एक ऐसा genre है जो बहुत मुश्किल होता है to kind of portray on screen. तो ये गिप्पी उनकी फर्स्ट हिंदी फिल्म थी, and it was his launch into Bollywood, and it was a great character. It was kind of like a very she was very bindas and very kind of उनको पता था मुझे क्या चाहिए लाइफ में, and मुझे तो सेट ही रहना है. And धर्म जी के साथ मुझे चांस मिला to share screen space with him. तो वो मेरे लिए बहुत, it was like wow, I was in awe. Like he's a legend. He's acted from कितने साल पहले, and to even be on the same screen as him was like a dream come true. These legends, to work with them, to get any chance to work with these legends, बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी चीज, एक proud feeling होती है कि I've worked with, in my first film I worked with Mithun ji, then I worked with Dharam ji, and it was like I had to pinch myself. Wow, I'm standing with Dharam ji, and I'm actually getting to romance him. So it was. So you had really, few scenes with him. You had few scenes. Yeah. So I was totally after Dharam ji in this film. कि मुझे क्योंकि he was rich and whatever. तो मेरा character ही ऐसा था कि she's very materialistic and everything.
So it's a funny character, and Yeah, definitely totally opposite of what I am. So it yeah, was great to work with someone who's like Dharamji, and yeah. getting to learn from him, hearing his stories, unki, life के stories and किस्से. It was amazing. Right. So, is it true? I haven't seen the film. Is it true that it's the role was like Sri Devi's role in Judai? Yeah, it was. You can actually somewhat compare it to her. Yeah, she was Yeah. just about money, and that's it. उनको Okay. कुछ और नहीं पड़ी. Yeah, she can sell So, her husband for money. इसी film में your not real life husband was there, Harbhajan Singh. Yes, he was there. Yes, we were dating at that time, and they needed end में कि I finally end up with someone, a great guy, and then Sameet Kang, who was a director, came up with the suggestion. He said, "हम हरभजन को क्यों ना लेने?" Hmm. So I said, "I'll ask him. I'm not sure if he will do it, but I'll definitely ask him." And it was a great one. It's just a मतलब एक Police officer. special guest appearance ही था. No dialogues, nothing. Just Yeah. सीधा मतलब एक look to the camera, and that was it. And Baju was on for it. He said, "Yeah, why not?" So it was a great ending to the film, actually. Right. Okay. First time He we were on played a screen police together. officer. Yeah, he played a police Yeah. in the film. Okay. And धर्म जी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस आपने हमारे साथ शेयर किया एंड इमरान हाशमी का भी इसके अलावा आपने लॉक में भी काम किया है Hmm. इफ आई एम नॉट मिस्टेकन लॉक इज द फिल्म जो आई थिंक पंजाबी की फिल्म है Yes, so that was my first Punjabi film. Sameep had actually come to me and he said, "Look, Geeta, हम बहुत अलग film करने जा रहे हैं if you're on for it, and it's something that has never been tried before, और मुझे ये ऐसी film अलग सी मतलब अभी तक जितने भी films आए थे पंजाब के industry में, it was all comedy, the same kind of scripts, the same kind of content. And he said to me कि हम कुछ अलग करने जा रहे हैं, and I want you to be a part of it. गिप्पी है इसमें, और you know you have a very different role, um, and Kugipa ji hai, so great lineup. And I said, okay, let me hear the role and let me see what the film's about. And it was an actual remake from Malayali film, which was not an Oscar nominated. It was a award-winning अवार्ड विन Malayali film, and which was also made in Marathi also. And I said, it's a different film. Yeah, why not? Let's do it, because I don't want to do the run-of-the-mill kind of same kind of Punjabi film. I mean, I had so many offers for the Punjabi industry, but I wanted to do something different. And it was something different. Unfortunately, it didn't work, but that's fine. That's that not in our hands, but we can only try to do something different. या And so yeah, that was my first entry into the Punjabi film industry. राइट ओके एंड विश यू सक्सेस की आने वाले दिनों में पंजाबी की भी करें हिंदी की भी फिल्में बहुत सारी करें Yes, ना I'm coming back into movies. I've got great offers coming my way, and now that my family's complete and my kids are growing up, but I'm getting back into getting back to work. So it's some exciting things coming up, which I'm looking forward to this year. एक film है जो सितंबर में शुरू होएगी. गुड फिर Hmm. कोविड की वजह से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी बहुत पॉपुलर हैं वेब सीरीज वेब फिल्म्स बन रही हैं तो नेचुरली बहुत से बिल्कुल. एक्टर्स बहुत सारा काम जिन्हें हमने बहुत दिनों से नहीं देखा था वो भी आ रहे हैं जैसे रवीना टंडन माधुरी दीक्षित की वेब सीरीज चल रही हैं सभी लोग कर रहे हैं काम तो नेचुरली वी वुड लव टू सी यू गीता एंड गीता हाउ डिड दिस सॉन्ग वीडियो कैम गुमशुम गुमशुम So Gumsum was made by friends of mine, Laval and Ajay. They're very close friends of mine who I've known for many years, and they were waiting for a chance to work together with me. और कोई ऐसा गाना नहीं आ रहा था उनके पास जो वो बोले कि ये कुछ मतलब कमाल का गाना है. तो जब ये गुमसुम गुम आया, Laval called me. He said, "Geeta, I have a song, and I want you to hear it, and it's amazing. Like it's a song that I want to direct you in."
And he sent me the song. He said, listen to it. And if you're on, then we'll direct it. If you're not on, then we're not going to direct the song. I said, okay, Oh, ठीक है. okay. I listened to it and I said, Lovell, I'm on. It is Hmm. a beautiful song, It and you've got a person, two legends of the music industry, Sukhshinder Shinda and Rahat Fateh Ali Khan. And it's such a melodious track that I couldn't say no. I said, definitely I'm on. Like, it's so beautiful. And they said, we're going to shoot in a very beautiful, large scale, like mahal, and, like very Indian kind of Devdas feel. And it was that. It was so beautifully shot. And I'm glad I, you worked worked. with them on the song. It was so beautiful. And it still is one of the, a hit track that Yeah, still is it's so played. And whenever you, beautifully. Yeah. yeah, even if you hear it today, you still, Oh, गुमसुम गुमसुम sing it. बहुत Yeah, प्यारा. yeah. दो लेजेंड्स हैं, जैसे कि कहा कि सुखविंदर शिंदा एंड ऑफ कोर्स राहत फतेह अली खान, और दोनों की कोलैबोरेशन थी, एंड बहुत प्यारा गाना है. हमने Yeah, कितनी बहुत दफा प्यारा गाना. बहुत दफा रेडियो पर भी सुना है ये गीत. पर मुझे आज तक, कल तक नहीं पता था कि इसकी वीडियो में आपने काम किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड यू लुक सो ग्लैमरस. बहुत साल पहले ही Thank आई you. इनका, अबाउट 10 Yeah, years, it was a total 7 8 Indian years. look. Yeah, yeah, very Indian, very, 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 like I said, the Devdas kind of feel. Like it was Yeah, yeah. something that I really enjoyed doing actually. Yeah, and your chemistry with Rahul Bhatt was very good as well. Very, very Okay, nice, nicely shot. thank you. Right. Okay, अब जरा आपकी पर्सनल लाइफ पे आ जाते हैं. भज्जी जी से आपकी मुलाकात कैसे हुई थी? कहाँ हुई थी? Was it in Portsmouth or was it in Mumbai? No, it was in India. It was just after the train had released. Actually, the train had released then, and I think he saw my song or my poster, and he tried to get in touch with me. So, um, I think he got his friend, one of his cricketer friends, to kind of find out कि लड़की कौन है. हाँ. Number पता किया, and he got in touch with me, and that's how our friendship started. And I was not interested. I said I'm not interested in any relationship at this point of time because I was very new to India, very new to this whole industry. अभी तब मेरी फिल्म रिलीज ही हुई थी. हम्म. एंड और तब सरिता जी, इंडस्ट्री बहुत अलग टाइम था लड़की के लिए. आज अलग टाइम है. जैसे आपने बोला ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, इतना सारा काम है लड़की के लिए, इतने सारे ऑप्शंस है. एंड द माइंडसेट्स हैव चेंज्ड टुडे. इफ यू हम्म. सी, आज एक लड़की कैन बी मैरिड, कैन बी हैविंग kids, and she can work. That option Yeah. is there. In 2006, that option wasn't there. It No. was either you either are Ma- single or what? and or you're out, or there's no option other than that, like, Hmm. other than the big screen. So it was a very, yeah, like I said, a different time for a girl. So I was very career driven and very ambitious at that time. And मैं बहुत new थी इंडिया में, मुंबई में. And but he was very persistent. 10 months he was, see that this is the girl I'm going to marry, you know. Oh, okay. And yeah, like सीधा उसने पहले दिन से बोला कि you're the girl I'm going to marry. And I was like, shadi? Like no, like I'm only 21. I was like all of 21 at that time. So Yeah. शादी तो बहुत दूर की बात थी. And but he was very clear, okay, no, you're the girl I'm going to marry. Hmm. And he was such a nice guy that 10 months later I said, you know what, this guy is a gem of a guy. And ऐसे लड़के मिलते नहीं है, दिखते नहीं है कि he's such Hmm. a big personality, लेकिन such a humble, grounded human being. Hmm. So I said, yeah. फिर सिलसिला So that's आगे how our बढ़ा. relationship started. Hmm. And yeah, we were dating for 8 years and then we got married. Okay. So has your life changed being with the celebrity?
बिकॉज वो अपने आप में बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, इज नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर खेलते रहे स्पिनर। सभी भज्जी जी को कौन नहीं जानता है। तो भज्जी जी के बारे में आपसे जानना चाहूंगी मैं, आपकी उनकी पर्सनालिटी, आपने कहा ही इज वेरी हम्बल, बट उनकी पर्सनालिटी के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी। फिर मैंने ये भी सुना कि आपकी शादी बड़ी ट्रेडिशनल एंड वेरी सिंपल वे में गुरुद्वारे में हुई थी, सो वो भी जानना Hmm. चाहूँ। हम्म। Yeah, so he's a very humble, very grounded guy, and the best thing about him, he's very family driven. So उनके लिए उनकी life, me, my kids, his family, this is like he's a very um, as much as the name that he's made and you know that the star status that he has, he's a legend of the game, which I never knew honestly. मैं क्रिकेट देखती नहीं थी और ना मैं उस फैमिली से हूँ जहाँ मेरी फैमिली क्रिकेट देखती है. So we didn't actually, I didn't know actually, what he did and how, what the game's about. But he's a very grounded and very simple man. And that's what I liked about him. And that's why I was very clear कि मैंने तो वैसे ही पहले दिन से बोला I don't want to marry any actor. I don't want to marry anyone from the film industry. But he's like my like I connected with him from day one. And the fact that he's also Punjabi, we have that same kind of roots and कल्चर। background, yeah, culture. Although his upbringing is very different from mine. I'm from UK, he's from Punjab, from a very small city in Punjab, Jalandhar. So even though our backgrounds have been very different and our upbringings have been very different, but yet we are so connected, and that is what was the beauty of our relationship. गीता, जब आपने पहली दफा अपने पेरेंट्स को बताया कि हरभजन सिंह इज I'm dating him or he's dating you, you both are dating each other, so पहला रिएक्शन क्या था आपके पेरेंट्स की तरफ से? My parents didn't know who he was. I didn't know who he was. My family didn't know because we don't watch cricket. So हाँ, you're not when you're not from a family who watches sport, या हम्म, you really don't know what the game and the players. Even like whatever sport it could be. Today if you ask like half the footballers, I wouldn't know because I don't follow the game anymore. I used to when I was in UK, but because of my friends. But today, if you ask me half the names, I wouldn't know. So they didn't really know. They just left it to me. They always said to me that you find your man, you find whoever you want to get married to because it's your life, it's your happiness. And whoever you're happy with, we are happy with. So that was very clear. From my mom, she always said that to me. so was your mom or your parents very protective, and she went with you to Bombay, but did she come back and you were on your own in Mumbai? How did you So no, manage? she had called my Masi from Punjab to be with me in Mumbai, अच्छा, because she said I can't obviously leave Geeta on her own in this big city, not knowing. मैं तो कभी घर से बाहर ही नहीं गई थी, कभी घर से बाहर रही नहीं. So I didn't know, okay, how to kind of run the house and cook and and just having family around is very different. You kind of need family around you for that support. So my Masi had come from Punjab to be with me, to stay with me, and to give me that family support, which, you know, it was the best thing that could have happened because I felt like my family hai yahan. I'm living with my family in Mumbai. So it made it very easy. It made my life much more easier. It was very hard initial couple of years because I would cry every day. oh, I'm missing my mom so much, and I'm missing my family, my brother, my sister, my dad. Everyone is so far away. It's not like yahan se Punjab, or it's like culture. thousands of miles away. You can't even think कि अच्छा मुझे Portsmouth जाना है. So I would miss my family so much, but कुछ पाने पाने के लिए कुछ खोना पड़ता कुछ है. खोना So पड़ता है. Yeah, Bhaji is very, very talented, very good spinner and cricketer. Spinner तो उनकी speciality है, लेकिन cricketer on top level. And 1998 से लेकर 2016 तक he was
right there. But recently we have heard that he has taken retirement from cricket. Why is that? Yes. Is it just because he's Then I think with every sportsman comes a day when you have to hang up your shoes, and that day had come. He had been thinking of retirement for a long time. काफी time से सोच रहे थे कि he had semi-retired. It wasn't something that was a overnight decision. He was semi-retired. He was only playing IPL for the last couple of years. So he decided कि अच्छा now I want to officially make that announcement कि I am retired, and so that day came a couple of months back when he said कि I'm calling it a day now, so he can focus on other things in life. So it is sad because we're not going to get him to see him play in IPL. And that was the time of the year that we all used to look forward to. Okay, he's playing for either Calcutta or Chennai or Mumbai. 10 साल yeah. मुंबई के लिए खेले, 3 साल चेन्नई के लिए, and 1 year with Calcutta. So it was always a great time of the year कि हम look forward करते थे. Even my daughter, she used to really look forward to watching him play To see his on dad. screen. Yeah. But that time has to come for every cricketer, every sportsman. So that time came for him, and we are with him 100% whatever he decides. So he's So into politics now. yes, so he's just Rajya officially Sabha. entered Rajya Sabha. आम Yes, आम पार्टी को ज्वाइन किया है, right? yes, yes, And he has appeared in many films as well, like 2004 में मुझसे शादी करोगी, then Bhaji in Problem, Second yes. Hand Husband we discussed before, and then 2 Tamil films as well. So do one you Tamil think film, one Tamil film, Friendship, अभी जो आई अच्छा, थी पिछले साल, yeah. okay, do you think time to come, are we going to see Geeta Basra and Harbhajan together in hero and heroine? You never know. You never know. Anything's possible, with him. कुछ भी हो सकता है. I was even shocked. I said, "You are acting? Oh my God! Like in a full-fledged film. आप मेरे side पे आ रहे हो अभी." So he's a natural in front of the camera anyway. He's very Yeah. good. मतलब one take actor है. मैंने देखा उनको, and he's very very natural in front of the camera. So, but you never know. We are doing something together soon. I won't say what, but we are doing something very exciting. Hopefully this year. It's been postponed because of COVID for the last 1.5 years, which we were meant to do. But hopefully that it will happen this year. Geeta, I've heard that apart from films and apart from acting, you're entrepreneur as well. Business कर रही हैं. किस तरह का बताना चाहेंगी? I'm venturing into something with the baby line. So that's something that once it ferments a little more, I will talk about it. But I've always had an initiative to get into this baby line. After having 2 children of my own, there's a lot of things that I realized that's not available in India. And that's something that I definitely wanted to do for mothers out there. And yeah, so it's something exciting coming up. एक और बात जानना चाहती हूँ कि when you go out, people see Geeta Basra with Harbhajan Man or Harbhajan Singh, or they say, oh, Bachi's wife is there, or is it other way around कि Geeta's husband is there? No, I think कौन right now because celebrity ज्यादा बड़ी बन जाती है, किसे ज्यादा exposure मिलता है? Right now because मैं बहुत time से I have taken a break from the industry, and I'm a very proud wife. I'm very proud of what my husband does and what he's done for the cricket and for India, and what he's going to do in the future also. There's a lot of things that he has great plans for Punjab, for India. And I'm a very proud wife, and my full support will be always with him. My priority will always be him and my kids, whatever comes, to me. But this life, my family,
is always my number one priority, and I'm always going to be by his side to support him, to guide him, to advise him wherever I can as a wife. So I am very proudly I'm known as Harbhajan's wife. 2009 में उन्हें पद्मश्री मिला, then Arjun Award मिला. So it's very we are all proud of him. What he's done for Yes. the country, what he's done, his contribution in sports is always सभी appreciate. Absolutely. And there's so much more to achieve, so much more that's coming his way. And I always will pray that he gets much more than what he's already got. And the future for him, is bright. And with him entering politics, there's so much that this young generation and, that they're the hope for India. And it's great to see leaders like him and to make a difference, to make a change. Yeah. So 2016 में जुलाई में आपकी बेटी इस वर्ल्ड में आई, एंड बहुत प्यारा नाम है हिनाया. Do you pronounce this way? Hinaya? Yeah, Hinaya. Hinaya. Yeah, Hinaya Heer Plaha. Beautiful name. And Yes. then your son, again, very traditional name, Jovenveer Singh. Yeah, Jovenveer Singh, yeah. So बच्ची उन्हें भी क्रिकेटर बनाना चाहते हैं या let's see, ऐसा कुछ नहीं है. Whatever they decide in life, we are there to support them. हमने decide किया था कि हमने क्या करना है, हमने कौन से रास्ते पे जाना है. Our parents fully supported us on that. And the same goes for our kids. We can't imply anything on them कि हमें ये बनाना है उनको. हमें चाहिए कि जो उनको चाहिए हम हमेशा उनके पीछे खड़े. And let them make their destiny, let them write their destiny, and let them be the captain of their own ship. Very good. So हम यही चाहेंगे कि एक साथ आप दोनों को भी पर्दे पर देखें, बच्ची को और आपको. You never know. अब because you are coming back again in films, so wish you all the best. बहुत सारी फिल्मों में देखना चाहते हैं. Pretty Face. Thank you. बहुत अच्छा. मैंने The Train देखी आपकी फिल्म, और मैं unfortunately आपकी पहली फिल्म नहीं देख पाई, और उसके बाद Second Hand Husband भी नहीं देखे. So मैं जरूर देखने की कोशिश करूंगी. And yes, do watch it. So all the luck. Thank you ever so much for your time. Thank you, Sarita ji. It's great being there. My mom. हाँ, मम की बात करना चाहती थी कि मुझे आपने पहले बताया था कि आपकी मम्मी रेडियो सुना करती हैं. बहुत आपकी फैन है. इनफैक्ट मेरी मम्मी यहाँ आए हुए हैं मुंबई, and she's with me right now. So she was very happy. Just bring her near the camera so that we can see. Mom, come here. She was very happy that I'm getting interviewed by you. She said, "Oh, Sarita ji, I am very big fan of hers. I love listening to her shows." So I said, I must tell her that because in so UK. Mummy abhi shy. Yeah, Mom. Mummy ka naam bataiye. Correct. My mom's name is Parveen. Parveen Basra. Yes, Parveen. So come. Just by this. परवीन जी, मैं आपको भी वेलकम कहती हूँ. आइए कैमरे के सामने. तो हम आपका भी ब्यूटीफुल. Yeah, there you go. जी परवीन जी, नमस्ते जी, सत श्री अकाल जी. बहुत अच्छा लगा कि पोर्ट्समथ से आप मुंबई अपनी बेटी के पास हैं. और आप बताइए कि कब सुना करती थी आप रेडियो? राइट, उन्हें सुनाई नहीं दिया. Parveen ji, can you hear me? I'm good, ठीक. Yeah, I couldn't believe talking to you. गीता ने जो मुझे बोला ना लंदन से इंटरव्यू, मुझे लंदन से किसके साथ था, बोलती सरिता जी के साथ. इतने सालों से 25-30 सालों से आपके सुन रही हूँ आपके प्रोग्राम. 35 years. तो आप टीवी एशिया भी देखा करती थी या सिर्फ रेडियो से जानती? Radio se, yeah. Radios, TV Asia, ZTV. So I work for all these channels as well. So I used to listen Sunrise Radio. Sunrise. तो अभी आप मुंबई में है ना, तो धूम रेडियो अपने फोन पर आप डाउनलोड कर लें. धूम रेडियो मेरा रेडियो है, हमारा रेडियो है, तो आप सुनिएगा और फिर कल से सुनना शुरू कीजिए. और कल हाँ जी, कल से आप जरूर सुनना शुरू कीजिए.
Yes, आपकी बेटी definitely. की फिल्मों के भी मैं गीत आपको सुनवाऊंगी, ठीक? Yes. थैंक यू गीता, Thank you. थैंक यू Thank प्रवीण you. जी, So nice टू talking ऑल to द you. बेस्ट। Thank you. बहुत प्यारी Thank you. बेटी है आप, और इसी तरह से आगे बढ़ते रहे। थैंक यू सो मच डार्लिंग, थैंक यू, हैव अ गुड इवनिंग, बाय बाय। Bye-bye. Bye-bye. थैंक्स। और इसी के साथ मैं सरिता भी अब आपसे इजाजत चाहती हूँ अगली मुलाकात तक के लिए। जी हाँ, हार्ट टू हार्ट में किसी और सेलिब्रिटी के साथ आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगी। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धूम रेडियो सुनते रहिए, सोलफुल मंडे देखते रहिए, और बस इसी तरह से टाइम बीता जाएगा। बाय बाय, टेक केयर। Call Skylord Travel on 020 8582 1199. We'll try and find the best deal for you. Whether you're looking for flights or your dream holiday, India, Pakistan, Dubai, USA, Europe or Africa. Call now on 020 8582 1199. Book online or on your smartphone at skylordtravel.com. Skylord Travel. Travel simplified. The gold, symbol of love, precious, ancient crystal structure. The diamond, Pakiza jewels for the precious moments of life.